Hello students, today we begin with the chapter of communication systems. For the sake of convenience, we have divided this entire chapter into two lectures. In the first lecture, we will be talking about the modulation and the systems available for communication. And in the second lecture, we will be talking about the various communication channels. So today let us begin with the basic introduction, systems and modulation. First we'll have to trace the entire development we have for the present day communication. If you talk about the modern development of communication systems, then the first thing which comes in our mind is telegraphy. If you talk about things before that, it was in a very rudimentary stage. You can say people were using fire, smoke, or maybe some person was running from one place to other place to deliver one particular information. But if you talk about some electronic communication, then it dates back to telegraphy, which was around, you can say, year 1835 that we started off with the telegraphy for modern communication. Telegraphy had several disadvantages, like one particular letter, then several letters making words. Those things were transferred, and you can say Morse code was mainly getting used into that, in which dot and dash, they were the ones in the coded form. They were transferring information from one place to the other place. After telegraphy, almost you can say 40 years later, you started off with telephones. But if you talk about the telephones of the time we are talking around 1870, then it had several limitations. This was not like today's telephone. Aaj ke telephone mein you have several channels, faster communication. But the kind of telephone we are talking about, probably it had single channel through which both ways communication was taking place. But anyway, it was the beginning of the things in the year around 1870. Then, if you remember, we had said in the chapter of electromagnetic waves that Hertz's experiment gave us the idea that an electromagnetic wave can be generated, and because of which radio communication started off somewhere in the year around 1895. From here you can say modern communication took a better leap, because electromagnetic waves were getting used through air, or you can say space was getting used for the transmission of one information from one place to other place. Now if you see the next development, then it was television. Somewhere around year 1936 or so, television transmission started. But if you talk about television transmission of the year 1936, then it was confined to a very small area. It was not like today that across the globe you can see each and every event. TV transmission was confined to a particular area. जैसे आज हमारे पास कुछ TV towers हैं, maybe in the range of 40 kilometers or so the transmission is taking place, but it was not possible from one country to the other country. Then in the year 1962, the United States launched its first geostationary satellite, that was known as Telstar, and geostationary satellite communication started off in the year 1962. In the same year, for the first time, it was inaugural speech which was shared between UK and the United States for the first time in the year 1962.
तो आज हम जो भी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन देख रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग since the year 1962, and in the last part we can say that internet started in the year 1990. It was of course being used for military services, which was called ARPANET, and after 1990 the pace of development of modern communication become much faster. For example, here if I am saying it was around 1835 and this is 1990, then you can see the pace of development was very slow. But nowadays you have seen that every year you have better and better communication available. Now if you talk about the communication, then always remember it is, we can say, faithful transmission. We are using a word, faithful transmission of signal from one point to the other. You understand? This is the meaning of communication. Now you are using the word faithful. What is the meaning of faithful? For example, if you want to understand all the things you have here, it's a very good idea that you can consider the example of the cellular phones you are having, because most of the time you are interacting with that kind of communication system. So it is very easy to understand all the parts we are about to discuss related to the communication system. If you talk about faithful transmission, then you see it's a very common experience of you that, let us suppose you are hearing the voice of someone who is speaking on the other side of the phone, then you can clearly recognize his voice. Whether he is familiar to you or not familiar, you can clearly recognize. This has been possible only if during the transmission there was no distortion of the signal which started off on the other end, isn't it? Let's suppose आप किसी को email करते हैं, तो जो data आपने यहाँ पे उनको भेजा है, exactly the same data he is receiving there, and that is called faithful transmission. It should not happen that during the process of transmission the information is lost. You understand? So जब भी हम communication करेंगे, तो along with the transmission of the information, we also have to see that up to whatever range it is going, there should not be any distortion. Now once you have understood the basic development, the way we have come to the present day communication, let us talk about the various elements involved in a communication system. Let us talk about the various elements of a communication system. If you consider any of the communication system you have today, first of all, there is a signal. For example, you can consider the case of a cellular phone. You are talking to someone. Now try to see the step-by-step process which is taking place whenever you are talking to someone on your cellular phone. Signal here means your speech, isn't it? आप उसमें कुछ signal throw कर रहे हैं. Of course, that signal is speech signal, it is audio signal, which has to be transformed into electricity with the help of transducer. Transducer we will be defining later on. For example, here there is a microphone in your cellular phone which is converting your speech signal into electricity, or in terms of electric current. This signal is going into a transmitter. Transmitter is an electronic gadget in which there is a large and several complicated processes taking place. We will be talking about transmitter in detail because there is some carrier wave involved into that, and this signal frequency that is mixed with
the frequency of carrier wave here in the transmitter. We will be coming into the detail of that. So first signal is going into a transmitter. Right now your cellular phone is working as a transmitter. Now it goes into a communication channel. This communication channel can be a wire, it can be space. For example, the household phone we have, generally जिसमें आप बातें करते हैं और वो केबल के थ्रू कनेक्टेड है, then your transmission is going through wire. If you're talking with the help of a cellular phone, then the communication channel is the space which is available to you. Now during this communication channel, several distortions can take place, maybe 40 types of disturbances possible during the communication channel, which has got the standard terminology which you are calling noise. And now after this communication channel, it will be going into some receiver. Here receiver means जो भी person आपका other end पे है, उसका cellular phone will be like a receiver. And from that receiver, every signal has been received in the form of, say, electricity, and that electricity has to be converted again into the form of audio signal, and that signal is received by you. This is the way any telecommunication process is taking place. आप इसमें signal insert कर रहे हैं, that is your phone. That phone is transmitting. जो यहाँ के लोकल हमारे एंटीनाज होते हैं वहाँ पे आपका जो भी सिग्नल है वो जा रहा है थ्रू दी फोन, एंड फ्रॉम देयर इट कैन गो टू सेवरल पासिंग स्टेशंस विच यू कॉल रिपीटर्स. फिर वहां से फाइनली वो उस पर्सन के पास जाएगा जिसके फोन से आप बातें कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड द रिसीवर. हिज सेलुलर फोन इज कॉल्ड रिसीवर, एंड फ्रॉम देयर द सिग्नल इज रिसीव्ड बाय हिम. नाउ talk about any kind of communication, whether it is a cellular phone or TV or any email, anything you have, it will be following the same kind of transmission system. Now one by one, you make yourself familiar with various terminologies we can have. What we have written here as signal, that is also given a name, baseband signal. This is a very standard term. Baseband signal means जो basic signal की frequency है. For example, आपने जो कुछ भी बोला, that is a speech signal, and that speech signal is to be transferred into current. तो current की जो भी frequency है, that is going in terms of some waves, that current frequency, that is called baseband signal. Now, as I was using the word microphone, so this is given a name, transducer. What is a transducer? Transducer is a device which converts one form of signal into the other form of signal. For example, जब आप बातें कर रहे हैं तो microphone is working as a transducer. On the other end, the speaker is working as a transducer, because on the sending end, audio signal is getting converted into current, और speaker में क्या होगा? Speaker में that current will be converted into audio system. जब तक इस तरह के ट्रांसड्यूसर्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती. ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कम्युनिकेशन चैनल हमने दिखाया है, इन दिस कम्युनिकेशन चैनल आइदर यू कैन सेंड द करंट, और फॉर फास्टर ट्रांसमिशन यू शुड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. So remember that any particular signal, if it gets converted into an electromagnetic wave, then the transmission is very easy. For example, you have talked about photodiodes and light diodes. Photodiodes and light emitting diodes, they are also working as transducers. मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पिक्चर ट्रांसमिशन करनी है, then this photodiode will be converting that picture into electricity, and that light emitting diode will be converting that electricity into picture. तो इस एंड पे आप फोटोडायोड रखेंगे एंड दी रिसीविंग एंड पे आप लाइट एमिटिंग डायोड रखेंगे. फॉर एग्जांपल, आपकी हमारे से भी बातचीत हो रही है अभी, तो माई फोटोग्राफ इज कमिंग टू यू. नाउ यू कंसिडर दैट माई फोटोग्राफ इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ ए कैमरा, and that electricity is again getting converted into a photograph in your iPod. You understand? So these are the systems working as transducers. You understand the meaning of transducer? Now आपने जो भी स्पीच सिग्नल दी है वो ट्रांसड्यूसर के हेल्प से उस पर्टिकुलर सिग्नल में कन्वर्ट हो गई है,
which is good for transmission. Now जब आप इस ट्रांसमिशन के अंदर में आ रहे हैं, then here you should understand there is something called noise. जब यहां से वेव ट्रांसमिट होगी तो उसके साथ कुछ नॉइज जो है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आपके फोन से जब वेव्स निकल रही हैं, देन इट इज नॉट एज सच दैट ओनली दैट वेव विल बी पिक्ड अप बाय द रिसीवर. रादर इन द प्रोसेस, इन द ट्रांसमिशन चैनल, लेट्स सपोज समवन इज डूइंग वेल्डिंग, तो वेल्डिंग की अल्ट्रावायलेट रेज वो भी उसके साथ मिक्स होगी. लेट अस सपोज एन एरोप्लेन इज मूविंग, लेट अस सपोज अ मोबाइल इज मूविंग, मोबाइल की स्पार्क प्लग की वजह से कुछ वेव्स जनरेट हो सकती हैं, एंड ऑल दोज वेव्स विल बी गेटिंग मिक्स्ड विद योर स्पीच सिग्नल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो भी रिसीवर में जारी होगी. सो योर जॉब इज नॉट टू ट्रांसमिट दैट नॉइज, और इवन इफ द नॉइज इज ट्रांसमिटेड, एट द एंड यू हैव टू एलिमिनेट दैट. दिस बिकम्स द मेजर प्रॉब्लम so long as noise is concerned. You will be really amazed that let's suppose you are talking in India, but someone is doing welding in the United States. That welding waves can affect your communication. This is really amazing. So it becomes a very challenging job for all those people connected with transmission, is that noise should be eliminated. Otherwise the communication will not be impressive. Now as I was saying that in this transmitter there is some process which you call modulation. And in this context, it is very relevant that we talk about a wave that is called carrier wave. If you want to understand the concept of carrier wave, just try to understand there is an old man which is trying to cross the road. Now, old man himself might not be capable enough to cross the road, and you are the one which is there to help. What will you do? आप उन old person को काफी अच्छे से इनकैप्सुलेट करते हैं. दैट मीन्स यू हैपन टू प्रोटेक्ट, एंड फिर आप उनके साथ मिक्स हो रहे हैं, उनको पूरी क्रॉसिंग करा रहे हैं, एंड आफ्टर दैट यू आर गेटिंग डिटैच फ्रॉम दैट ओल्ड मैन एंड ही इज पासिंग ऑन. एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर वेन एवर यू आर ट्रांसमिटिंग योर सिग्नल. लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट स्पीच सिग्नल गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू योर सेलुलर फोन. नाउ आपकी जो स्पीच सिग्नल है वो काफी वल्नरेबल होती है. अगर आप नॉर्मली स्पीच दे तो दैट स्पीच कैनॉट बी ट्रैवलिंग फार ऑफ, उसकी अटेन्युएशन होगी. अटेन्युएशन मीन्स व्हाट? अटेन्युएशन का मतलब है कि इसकी पावर जो है दैट विल बी गेटिंग डिमिनिश्ड, इजंट इट? आप बोलेंगे तो कितनी दूर तक आपकी वॉइस जाएगी? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज, बहुत ही कम होगी. नाउ इफ यू वांट दैट रेंज शुड बी इंक्रीज्ड, देन आपके स्पीच या जो भी सिग्नल आप थ्रो कर रहे हैं उसकी पावर कम नहीं होनी चाहिए, अटेन्युएशन नहीं होनी चाहिए. तो कैरियर वेव एक हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड हाई पावर की वेव होती है जिसके साथ हम उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं, एंड दैट कैरियर वेव इज द वन विच इज ट्रांसमिटिंग. जब आप फोन से बातें करते हैं, इट इज नॉट योर स्पीच विच इज गोइंग ऑन, रादर स्पीच इज इनकैप्सुलेटेड इन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव दैट यू कॉल कैरियर वेव. नाउ उस कैरियर वेव के साथ आपकी जो स्पीच वेव है या ऑडियो वेव है उसको मिक्स करने की जो वर्क होती है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, and the device in which it is done that is called modulator. You understand? तो यहां पे जो भी प्रोसेस हुई इसमें ट्रांसड्यूसर ने आपके ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया. विद द हेल्प ऑफ some device we are generating some carrier wave. That carrier wave is getting mixed with the audio wave, and that process is called modulation. Now that modulated wave will be getting transmitted through the communication channel. Now अगर आपकी रेंज बहुत ज्यादा होनी है, in case you want that आपकी वॉइस काफी दूर तक जाएगी, देन मे बी वन ट्रांसमीटर इज नॉट सफिशियंट इनफ टू डू द कंप्लीट ट्रांसमिशन. इन दैट केस यू विल बी रिक्वायरिंग सर्टेन रिपीटर्स. फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी सोसाइटी में बहुत सारे सेलुलर फोन के एंटीनाज देखी होगी जो वन बाय वन आपके सिग्नल को आगे आगे तक ट्रांसमिट करता रहता है. Now in the process of transmission already you have seen there can be some diminishing of the power which you call attenuation. तो उनको compensate करने के लिए हम amplification का वर्क करते हैं. Understand? Repeaters क्या होंगी? Repeaters are basically picking up the signal, amplifying and then transmitting. Maybe the frequency in which it is picking up and the frequency with which it is throwing they might not be same. Generally हम उनको different रखते हैं
so that later on, let's suppose some problems are occurring, then we can find out whether the problem is in receiving or in sending, which you call uplink and downlink. तो uplink frequency जनरली हम ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू दी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, एंड एम्पलीफिकेशन कर करके वो आगे ट्रांसमिट करता जाएगा. देन ऑन द रिसीविंग एंड द वेव विच हैज कम, जैसे आपने कहा ओल्ड मैन को जब आप क्रॉस करा चुके हैं, आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग डिटैच्ड. सो मॉड्यूलेशन की बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगी, विच यू कॉल डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन के बाद जो कैरियर वेव है उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, एंड जो ऑडियो बेस बैंड सिग्नल्स थी वो हम ट्रांसमिट कर देंगे, एंड दिस विल बी कॉल्ड फेथफुल ट्रांसमिशन. बीच में जो भी नॉइज वगैरह हो गई उसको हम फिल्टर आउट करके इस तरीके से कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड करते हैं. यू अंडरस्टैंड दी बेसिक एलिमेंट्स एंड सेवरल टर्मिनोलॉजी वी विल बी यूजिंग. नाउ आफ्टर दिस लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन हैव. Now let us talk about various types of communication. There can be several groups in which you can categorize the various types of communication. First, try to see according to the nature of the signal. According to the nature of the signal, अगर देखा जाए तो मे बी देयर कैन बी स्पीच कम्युनिकेशन. जैसे आप फोन्स पे बातें कर रहे हैं तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को हम स्पीच कम्युनिकेशन कह सकते हैं. इसके साथ अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी, मे बी थ्रू लाइन, मे बी थ्रू स्पेस वेव. देन यू हैव पिक्चर कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल टीवी, और थ्रू द सेलुलर फोन. लेट अस सपोज यू आर ट्रांसफरिंग इमेज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, सो दैट विल बी कॉल्ड पिक्चर कम्युनिकेशन. यू हैव अदर कम्युनिकेशन विच यू कॉल फैक्स, इजंट इट. फैक्स में कोई भी रिटन डेटा की आप स्कैनिंग करते हैं, दैट रिटन डेटा इज कन्वर्टेड इनटू करंट, दैट करंट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर वो दूसरे एंड पे ट्रांसमिट होती है. और मे बी यू हैव डेटा ट्रांसफर. ऑल सच कम्युनिकेशंस फाइंड देयर एग्जाम्पल इन योर सेलुलर फोन. आप उससे बातें करते हैं, आप पिक्चर्स भेज सकते हैं. If you have some scanning facility in your phones so that data can be scanned and then it can be sent to the other end, जैसे आप पिक्चर लेते हैं उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं और फिर उसको थ्रो कर रहे हैं. डेटा ट्रांसफर, लेट सपोज कोई भी एक फोन नंबर आपने एक जगह से दूसरी जगह थ्रू किया है, दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन हैव जनरली in your normal life. This category is according to the nature of the signal you are throwing. Now the second category can be according to the mode of transmission. मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो मेजर टाइप की होती हैं. वन इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, another one is called digital signal. In your day-to-day life nowadays you are having only the digital signals, in which the signals are in terms of low voltage and high voltage. जो भी signals होती हैं जिसको आप बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, 0 and 1, as you have already seen in your discussion of logic gates, वहां पे signals आपने देखा था 0 और 1 के फॉर्म में होती है. They are called digital signals. इनके कुछ एडवांटेज हैं, इनकी कुछ डिसएडवांटेज हैं. मेजर डिसएडवांटेज डिजिटल सिग्नल की जो होती है, इसके ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन की लॉस हो जाती है, एंड इट इज नॉट पिकिंग अप ऑल द इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज आइदर 0 और 1, नथिंग इन बिटवीन. बट एनालॉग सिग्नल इज
the one which is not losing any information. इसमें सारी इंफॉर्मेशन या सिग्नल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती हैं. जनरली एनालॉग सिग्नल्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, बट फॉर ऑल योर मोबाइल फोन्स और आजकल आप डिजिटाइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ टीवी और योर केबल इज बीइंग इन प्रोमिनेंस. सो ये डिजिटाइज सिग्नल जो है इनकी अपनी कुछ एडवांटेज ये है, दे आर फास्टर, बट थिंग इज दैट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एंड डिस्टॉर्शंस इसमें ज्यादा होती हैं. एनालॉग में आप तब यूज करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन जब यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज एनी सिंगल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल रॉकेट टेक्नोलॉजी एज आई सेड, तो वहां पे आप डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन यू कैन हैव दीज टू कैटेगरीज. नाउ इन द थर्ड कैटेगरी you can have depending on the kind of communication channels you have. In the third category you have according to the communication channel. Or transmission channel you can say. Based on this, nowadays you have either line communication, cables use हो रही हैं. For example, if you talk about your phone, जब आप डेटा केबल से अपने फोन की नेटवर्क जो भी है उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हो, और मे बी सम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू योर सेलुलर फोन विद द हेल्प ऑफ डेटा केबल, देन दिस इज कॉल्ड लाइन कम्युनिकेशन. But let's suppose you are transferring through the Bluetooth, then it is space communication you are using. You understand? आप चाहे वो स्पीच सिग्नल हो चाहे पिक्चर सिग्नल हो, सारे के केसेस में देख सकते हैं जो ट्रांसमिटिंग चैनल है, either you are using line, some cable or wire, or the free space that is getting used. यही दो मेन इसकी कैटेगरी होती हैं. And the last group or category you can have, that is according to the type of modulation. We will be coming into the detail aspect of this modulation today, but अभी हम उसकी categories देख रहे हैं. One category is called amplitude modulation. In short, you happen to call it AM. You understand? ये सबसे बेसिक लो फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन होती है, वेरी इजी, बट कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है, इसीलिए इसकी इफेक्ट्स भी बहुत अच्छी नहीं है, बट एक जनरल ट्रांसमिशन के लिए हम इसको यूज करते थे. इससे भी ज्यादा क्लैरिटी तब आती है व्हेन यू आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. which you call FM. Nowadays, in fact, FM is much more popular compared to AM. Maybe you are not even using AM modulation, amplitude modulation in your radio sets. It's only the frequency modulation probably you are using, but both of them are available. Still, you can see the picture of TV, they are AM band, and the sound which you are getting, that is on FM band. दोनों हमारी use होती हैं. We will not be having any discussion on phase modulation, but still it is pertinent to mention here. एक तीसरी टाइप की मॉड्यूलेशन भी होती है, which you call phase modulation. So we will not be talking about that. We will be having some mathematical analysis of this amplitude modulation and the aspects of frequency modulation, the qualitative aspects you can say. Phase modulation के बारे में हम बातें नहीं करेंगे. Now, once you have understood the various categories or types of systems you have, let us talk about modulation. Why modulation is necessary? What is modulation? Let us talk about that.